Okay, so let me welcome you, all of you again, and let's start the session today. So today's session will be on string, or we will see the string handling. Okay, let me write it in the comments so that it doesn't affect the program. Okay, so string handling, we're starting with the string handling. Okay, and we'll start with some of the programs, or we'll see some of the methods from sorry, Java and string handling. Okay, so some of the methods which we can use to handle the string. Okay, and what we can see or what we can do with the strings. Okay, so to start with, let's do one program. Yesterday we have seen arrays and all. Okay, so I'll write a small program. Let's say class. Let me write the same thing, string handling. Okay, let's call it one. I'm saying one. Okay, so if you see the way I'm writing my programs, okay, you will understand a lot of other stuffs so that you can work on the things. Okay, I'll just resize the window a little bit so that you can see it properly. Okay, so what I generally do is a lot of time you face a lot of mistakes initially. So what I'm doing here, follow these methods. Okay, so curly brace open, then close, and then I'm going here, enter, okay, and tab. Okay, so now I'll be adding other stuff. Let's say public, static, void, then main. Again, bracket open, close, then string arg, square bracket open, close, down, curly brace open, close. Okay, let's define a string. Let's call it s. Okay, equals to let's say I'll be writing I love. What do you want to write? You can write anything. I love Java. Okay, so then let's say or I'll do it like this. So system dot out dot println. Okay, curly brace open close, again like this. And if you want to write this, let's say original string, okay, equals, or you can use colon here. Okay, I want to show it like that. I'll assign a little space, then concat, and I'll say s. I'll say s. Let me save this program. Okay, so we will save this program in E drive, and we'll go to the Java programs. Okay, so I'll say all files. Let's call it string handling Java. Okay, it's already there. So string handling one, I think we had named it one. Yeah. Okay, so string handling one is there. Okay, now let's give it a try to run that program. So Java C, then string handling one dot Java. Okay, so as of now there is no error. Let's interpret that. So string handling one. Okay, and we can see the output, original string I love Java. Okay, so we just wanted to try basic stuff first. Okay, so that you can understand how you can deal with the basics. Okay, then we'll start with the other stuff now. So first thing what we are going to do here now is, okay, why not print the length of the string. Okay, so let's say like this, length of the string. Okay, so what do you mean by the length of the string? If we say here the string here is this I love Java. Okay, so what do you mean by the length of the string? When we say length of the string, it means the number of characters present in Java. Okay, including these white spaces, including the white spaces. Okay, so how many characters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so how will you do that?
So the first thing is, let's say, see, the string is a class. String is a class which we use as a data type. When we say string is a class, that means the class may have some methods or functions. Okay. And when we say this, okay, this is not a variable. This is basically the object of string. Okay. This is not a variable. This is basically the object of string. So you can say object dot. We can call a method. Sorry, length. Okay, and whenever you call a function, it's like this. So we are calling a function, it will return the number of characters present in this particular string this here. Okay, so I'm saving that again. Let me compile it again. No error, and let me interpret it again. So it's showing us. Okay, the original string is I love Java. Then length of string is 11. Length of the string is 11. So 11 characters are present in the string. But there is one more thing. Okay, one more thing we just want to tell you. Okay, see, there is a difference between this length function, and if you remember, we had used yesterday, that is, let's say, integer array. Okay, goes to, let's say, new int. Okay, and we say 5. Okay, and when we say for, okay, so integer, I'm using the old syntax now. Okay, so I equals to 0, then I less than, we generally use 5, or we can say a dot length, apologies. Okay, a dot length and I plus plus. Okay, so likewise we can use that, and we can say system dot out dot, okay, println. Okay, and we generally write a of I. Okay, so there is a difference. Okay, keep that in mind. When we say length variable, this is basically the length variable. This is the length variable used with the array, and this is the length function. Okay, so whenever you use function, okay, whenever we use functions, there is always a round brackets used with it, and it is used with the object. Okay, and length variable is used with array. Okay, so you need to keep two things in mind. Okay, what length function returns is number of characters. What length function returns is, okay, let me write it here. Okay, uh, length function returns number of characters, or let me keep it short, as in string. Okay, and where what the length variable returns, number of elements in an array. Okay, so you need to understand that. So keep that in mind, don't get confused with that. A lot of people initially get confused with that. Okay, so you don't need to get confused. Okay, तो ध्यान रखना है, इसमें confused नहीं होना है. You don't need to get confused. Length function returns number of characters in a string, and length variable return number of elements in an array. Number of elements in an array. Okay, so hope there is no confusion now. Okay, and I don't need to get confused. Okay, so keep that in mind, what happens with this. Okay, so this is how we deal with the things. If you want, I'll just run this program again, but we have just added an array. Okay, and that is without any, we haven't declared any values here. Okay, so even if we run, sorry, even if we run that, okay, so we will get 5 times 0, 10. So this is how we work with this. Okay, so you need to understand how we go with that. Fine. So so the string was I love Java, and we print the original string, just concatenated here s. Okay, and it will print the value of s. Then to print the length, what we used is s dot length function we have used. Okay, we have used length function.
Okay, so when we use string length function and in array, okay, we use length variable. We use length variable. So keep that in mind. Okay, don't get confused. Okay, you don't need to get confused. Initially confusion hota hai, initially people get confused, but keep that in mind why we what we use with what. Okay, so length function is in string and length variable is in array. Okay, so I was just repeating that again. Fine, hope the things are clear. So we'll move ahead with the things. So I just cleared the output and we'll write the another thing here. Okay, fine. So I'll use the same program. I'll not write the other one. Well, I'll rename it. Okay, so let's say string handling 2 dot java. Okay, so the string is same. Now we will use the another one. Okay, so let's say system dot out dot println. Okay, now character at given index number. Okay, so we need to find the character at given index number. Okay, so what is indexing again here? Indexing starts with 0. So when we say total characters are 11, indexing will be 0 to 10. Total characters are 11, but indexing will be 0 to 10. Okay, so it will be I will be 0, then the space is 1, L is 2, and like that. Okay, so on. Okay, so we can write it like that. Fine. Then if we say, let's say s dot character at, okay, so this is again the way Java uses it. If I say 2, okay, it should be L. Okay, so this is the way Java writes methods and all. Okay, so you need to understand that and keep that in mind. Okay, and that applies to a lot of things. So let me write it here. Okay, let's say naming convention. Okay, so naming convention, it is basically naming convention. We can say I'll use a multi-line comment here. Okay. So naming convention for, let's say, variables and objects and classes. So you need to keep that in mind कि कैसे लिखना है क्या लिखना है. ठीक है. When we say variables and and objects, okay, it should always start with small letters. Okay, so if you see s is also we have used small. ठीक है, s को भी हमने क्या किया, small लिया है. ठीक है, यहाँ पर भी हमने देखो character मतलब functions को भी ये लिए. Functions should also be there. Okay, functions, objects, yeah, variable, functions, okay, and objects. Again, so always first word, or you can say the first word is completely small letters. Okay, and rest of the words will have first letter capital. Okay, for an example, अगर आप multiple कुछ लिख रहे हो, ठीक है, let's say you are using writing a function to input the uh, things or something like that. So जैसे यहाँ पर char add लिखा है, तो char में देखिए अगर first word completely small letters है, then add में क्या लिखा है, first is capital. ठीक है, so a lot of functions you can create. Let's say first name variable हमने बनाया, ठीक है, last name variable बनाना है, we will write it like that. Okay, then if you are writing objects, similarly आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर हम objects बनाए तो तब भी हमें ऐसे ही लिखना है, और अगर आप function बना रहे हो तब भी हमको ऐसे ही लिखना है, तो ध्यान रखना है. ठीक है, but class names जब आता है तो apologies, class name, when we say class name, so class name should have every okay,
every word will have the first letter capital. Okay, every word will have first लेटर कैपिटल. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक कहते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास एक क्लास है, लेट्स से circumference of circle. Okay, so we will write it like that, circumference of circle. Okay, so if you are writing a thing like this, you can write it like that, but यही अगर हम function लिखते हैं, ठीक है, तो it should have been like this, circumference of circle. Okay, so first word completely small, rest of the words are having first letter capital. Okay, बट अगर हमने क्लास बनाया है तो हमने क्या लिखा है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है. ठीक है, तो ये जावा का एक कोडिंग स्टैंडर्ड बोलिए या नेमिंग कन्वेंशन है जो जावा इसको फॉलो करता है, एंड वी शुड आल्सो फॉलो दैट. और अभी से अगर हम आदत लगाते हैं तो हमारा कोड ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, हमको बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनीज में भी बहुत सारी चीजें फॉलो होती है, तो अभी से अगर आप आदत लगाते हो तो बहुत अच्छी बात होगी. Okay, so don't ever get confused with that. So a lot of things are like that: array, index, out of bounds. Okay, so exception. Okay, so ऐसे बहुत बड़े बड़े क्लासेस के नाम भी है, ये तो अभी छोटा ही है, मैंने जो एक लिखा है. ठीक है, सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड. ऐसे क्लासेस भी हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है जिसका यूज हम करते हैं. Okay, fine. So hope the things are clear. Okay, so I'll just remove this and we will start with that. So character add. ठीक है, तो हमने अब क्या लिखा है, character add. So when we say character add 2, we will get something. I'll write another one. Let's say character add. What do you say? 5. Okay. So हमने दो ये लिखा है. ठीक है, so let's check, or let's say given index number, we will get the output. Okay, so first we will compile that Java C, or let me use the thing which we already had. Okay, so we save the time. Okay, so no error is not there, कोई error अभी यहाँ पर नहीं है. ठीक है, and let's say 2. Okay, so see, original string is I love Java. The given index character at given index number, that is 2. 2 पे क्या है L, 5 पे क्या आएगा E. Okay, and if I had given 6, okay, 5 की जगह अगर हमने 6 दिया होता तो क्या होगा, स्पेस. 5 की जगह 6 अगर दिया होता तो क्या प्रिंट करेगा, स्पेस. ओके, स्पेस प्रिंट करेगा तो यहाँ कुछ दिखेगा नहीं. सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड. ओके, सो ध्यान रखना है. Okay, so you can do it like that, or you can even do it like this. Let's say for अगर हम लूप करते हैं इसको, ठीक है, इंटीजर, अगर मुझे पूरा एक एक कैरेक्टर अगर प्रिंट करना है तो क्या कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, क्या लिखना पड़ेगा बताइए. टेल मी इन द कमेंट चैट बॉक्स व्हाट आई विल राइट. I want to print every character on new line. System.out.println. Okay, and let's say I'll say character or s dot character add. क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, we will say s dot length. Yes, very good. S dot length. Okay, function. Okay, s dot length function. So this will return the number of characters. This will return the number of characters in a string, in the string. Okay, तो यहाँ पे हमें number of characters कितने string में पता चल जाएगा, तो हमको particularly number देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, या miscalculation करने की जरूरत नहीं होगी, गलत नहीं होगा. ठीक है, and if I say I, so now it should print all the characters. Okay, so चलिए run करके देख लेते हैं, है ना. So it's like this. What we are getting, see errors.
बहुत सारे एरर सब भी दिखा रहा है फॉर इंटीजर I इक्वल्स टू 0. I not declared. Okay. So simple. It shows things like that. Okay. So again, let's compile that. Sorry, हमने अभी फिर से प्रोग्राम को सेव नहीं किया. Okay. Now the program is saved. Okay, it's there. Now if we run the program, okay, now if we interpret, okay, अब क्या होगा? We are getting the output. See, space is also printed here. Space भी यहाँ पर print किया हुआ है. Okay, so space is also counted. Okay, और 6 हमने यहाँ पर यूज किया गया था, तो यहाँ पर भी देखो it has shown the space. Okay, so it is showing the space. So we need to understand that. Okay, तो यहाँ पर हमें हमेशा क्या यूज करना है? S dot length, S dot length. Okay, and then character at I हमने लिया है, तो it will print in the loop. ठीक है, loop में क्या किया हमने? इसको हर एक कैरेक्टर को न्यू लाइन पर प्रिंट किया है. Okay, so it's again very easy. Okay, fine. So hope you guys understood this. Okay, so we'll start with a new program, a new method. Okay, we'll try with the another method. Okay, so character हो गया. Now let's check the. We have seen the character. Now we'll see the another thing. Okay, यहाँ से हम change करते हैं. Let's say, I'll say index of given character. Okay, index of given character. So I'll use the same thing properly. Okay, यहाँ पर भी हम इसको एक और बार प्रिंट कर लेते हैं. Okay, I got a question that how character at 2 is L. See, indexing starts with 0. Indexing हमेशा कहाँ से start होता है? 0. So I का index क्या होगा? 0. Then space का index क्या होगा? 1. So L का index क्या है? 2. Okay, so hope you understand that. Okay, so indexing always starts with 0. Total number of characters is 11. Okay, but when we say index 0 to 10, so indexing always starts with 0. Okay, now अगर मुझे यहाँ पर चेक करना है कि गिवन कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर क्या है. ठीक है, अगर हम कोई कैरेक्टर पास कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है. ठीक है, सो फॉर एन आई विल यूज अ मेथड इंडेक्स ऑफ लेट्स से आई विल से, जैसे अभी आप पूछ रहे थे एल का क्या है, तो ठीक है, आई विल प्रिंट इट लाइक दिस. देन again index of, I'll say a. Okay, but I need to define it like this. Okay, so this is a particular character, single character we are passing in that. Okay, तो इसको हम ये कर लेते हैं. इसको मैं कट कर लेता हूँ. We don't want this. Okay, and let's save it with another name. That's 3. Okay, 3. Okay, so index of L and A अब क्या है वो हम यहाँ पर देख लेंगे. ठीक है, yes. Okay, so index of L, capital A. What is index of capital A and what is the index of A? Okay, capital L and A. Okay, so let's check here कि क्या हो रहा है. ठीक है, so we will compile 3. Okay, so no error. Okay, and if we go with interpretation, see, the string is I love Java. Okay, see, when we say index 0 किसका है? I का, space का 1, L का 2. ठीक है, so we have got it. Okay, so L is
2, okay, and A is showing 8, okay, but ये इसका दिखा रहा है, not of this one, okay, तो यहाँ हमको ध्यान रखना है when we say index of, okay, whenever we use index of, it starts scanning from the 0th index, और जहां पर वो कैरेक्टर फर्स्ट टाइम मिलेगा, ठीक है, so it will stop on the first occurrence of that character, it will stop on the first occurrence of that character, ठीक है, तो फर्स्ट मिला 8 पर A मिल गया, ठीक है, वहीं रुक जाएगा, it will not print or it will not give me all the indexes, ठीक है, वो सारे इंडेक्सेस हमको नहीं देगा, ध्यान रखना है, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, ठीक है, बहुत लोग इनिशियली कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके, तो ध्यान रखना है हमको, इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ ओनली फर्स्ट ऑकरेंस, ठीक है, तो ए अगर इस स्ट्रिंग में 10 बार भी होगा तब भी वो 10 बार हमें नहीं दिखाएगा, इट विल स्टॉप ऑन द फर्स्ट ऑकरेंस, इट विल स्टॉप ऑन द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर, ठीक है, एंड इट विल नॉट शो मी दिस last one or the later ones, okay, it will not show me the last ones or the later ones, but yeah, we can do one thing, okay, और जैसे हमने लूप लगाया था उसी को हम फिर से ले लेते हैं, ठीक है, as dot length, ठीक है, and let's say अभी आपके लिए we will call the method index of, ठीक है, बट अब अगर मैं यहाँ पर लूप लगाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, तो इसको हम इसमें यूज नहीं कर पाएंगे, तो हर कैरेक्टर को हमको यहाँ पर पास करना पड़ेगा, ओके, तो अब हर कैरेक्टर को पास करना है तो कैसे करेंगे, हर कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर अगर हमको यहाँ निकालना है तो कैसे करेंगे, एनी आइडिया? कैसे करेंगे? Can I say it like this, character or s dot character at I, स्ट्रिंग लिख सकते हैं, पूरा स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, पूरा स्ट्रिंग लिखेंगे तो क्या मीनिंग रहेगा, ठीक है, अब इसके ब्रैकेट में हमने एक और भेज दिया, ठीक है, सो बेसिकली वी आर ऑप्टिमाइजिंग अ कोड लिटिल बिट, तो s डॉट कैरेक्टर एट आई, तो आई पे जो भी कैरेक्टर होगा फर्स्ट कैरेक्टर वो आ जाएगा, फिर उसका इंडेक्स नंबर वो बता देगा, है ना, ऐसा हो सकता है क्या, ट्राई किया जाए, सो चलो इसको सेव कर लेते हैं पहले, देन इसको रन करते हैं, सो नो एरर, ठीक है, अब ये करते हैं तो क्या हो रहा है, आ रहा है इंडेक्स, है ना, आई का 0 आ गया, देन 1 स्पेस का 1 आ गया, देन अगेन 2 एल ओ इज 3 4 ई इज 4, देन स्पेस सॉरी 5 ये आ गया, ठीक है, देन स्पेस का अगेन 1 बता रहा है क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट यहाँ पर कैरेक्टर हमको मिल गया था, जे इज 7, ए इज 8, वी ऑलरेडी यहाँ पर था इसलिए वी भी 4 बता रहा है, ठीक है, देन अगेन ए का 80 बताएगा, सो इट इज नॉट रिपीटिंग इट, ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ऑकरेंस पर ही वो रुक रहा है, जैसे स्पेस डबल है, वी डबल है, ए डबल है, तो उसने उसको रिपीट नहीं किया, फर्स्ट ऑकरेंस पर ही हमको मिल रहा है, फर्स्ट ऑकरेंस पर ही हमको मिल रहा है, ठीक है, तो हमें आगे फिर से ये करने की जरूरत नहीं है, हमको ध्यान रखना है, ठीक है, इट विल नॉट रिपीट इट विल स्टॉप ऑन द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर, इट विल स्टॉप ऑन द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर, ठीक है, तो इस तरीके से भी हम नेस्टिंग कर सकते हैं, लूपिंग कर सकते हैं, या चीजें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, कोड को ऑप्टिमाइज किया है, कोड को हमने क्या किया, ऑप्टिमाइज किया, अब मैं यहाँ पर ये भी काम कर सकता था, अगर जैसे बेसिकली आप हमेशा करते हो, व्हाट आई कुड डू इन कैरेक्टर सी इक्वल्स टू कैरेक्टर एट, ठीक है, फिर हमने लिखा होता आई, ठीक है, एंड देन इफ आई पास दैट सी हियर, ओके, I could pass that C here, ठीक है, सो ऐसा भी कर सकते थे, बट अब मैंने क्या किया, डायरेक्टली वहां पर लिख दिया, क्योंकि इस लाइन में, ठीक है, एक तो लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है, ठीक है, एक तो क्या हो रहा है, लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है, लाइन ऑफ कोड हमने बढ़ाया था, एक लाइन का कोड बढ़ गया, सेकंड ये अगर हम कैरेक्टर वेरिएबल एक नया बना रहे हैं तो इसको कुछ मेमोरी तो लगेगी, कुछ मेमोरी तो इसको लगेगी, ठीक है, प्रोसेसिंग भी हो ही रहा है, ठीक है, सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर एंड वी आर बी कंज्यूमिंग सम एक्स्ट्रा मेमोरी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ऐसा लिखने से
फिर हमने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, इसको सॉरी यहाँ पर एस डॉट लिखा होता हमने, पता है, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पर, नहीं, वी डोंट नीड टू राइट दिस, ठीक है, वी डोंट नीड टू राइट दिस एंड वी डोंट नीड टू पास द सी हियर, ठीक है। सी पास करने की जरूरत है क्या हमको, नहीं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन डायरेक्टली राइट इट दिस, ठीक है। जो यहाँ पर हम कॉल कर ही रहे एस डॉट कैरेक्टर एट, ठीक है, और उसको नए वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत क्या है, जब हमको इसको पास करना है, जब हमको इसको पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो एक एक्स्ट्रा लाइन भी बचा ली और मेमोरी भी बचा ली, क्योंकि एक नया वेरिएबल क्रिएट करने में कोई मीनिंग है, नो, ठीक है, क्योंकि वहां हम वही काम कर रहे हैं, एस डॉट कैरेक्टर एट आए, पहले कैरेक्टर निकाल रहे हैं, देन वी आर पासिंग भी, मतलब असाइन कर रहे हैं, नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और उसमें असाइन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब करने से बेटर है कि हम वो सारी चीजें प्रोसेसिंग, उतना प्रोसेसिंग भी बचा सकते हैं एंड मेमोरी भी बचा सकते हैं एंड एक लाइन ऑफ कोड भी हम बचा सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली कोड ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज बेसिकली कोड ऑप्टिमाइजेशन, ओके। तो हमने कोड ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है। तो इसको बेसिकली कोड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत बेटर होता है हमेशा अगर आप इस चीज में यूज करते हो या अगर आप इस चीज की आदत लगा लेते हो, ठीक है। बट इनिशियली आपको उतना ये नहीं होगा या आपको सूझेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको उतना कोडिंग का प्रैक्टिस नहीं होगा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस आपको इसलिए करना है, इसलिए भी हमने कल कुछ असाइनमेंट दिए थे, ठीक है। बट ओनली 3 people हैव ट्राइड इट, ओनली 3 people हैव ट्राइड इट, ओके। 3 लोगों ने उसको ट्राई किया है, बाकी लोग भी आई होप कि आज कुछ करेंगे, है ना। सो गिव इट अ ट्राई, ठीक है, ट्राई कीजिए, ओके, क्योंकि वो आपके ही फायदे के लिए ना, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया इंडेक्स ऑफ, ये तो हो गया इंडेक्स ऑफ, ठीक है। यही अगर हमको लास्ट जो कैरेक्टर्स है जो ये छोड़ दे रहा है, ठीक है, जैसे अगर हम वी का ये पहला कैरेक्टर था वी, ठीक है, या फिर यहाँ अगर हम देखते हैं तो स्पेस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वी अगेन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ए का भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। यही अगर मुझे लास्ट वाला चाहिए, मुझे अब फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए लास्ट, लेट्स से आई वांट लास्ट इंडेक्स, ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, फर्स्ट वाला चाहिए क्या हमको, नहीं, ठीक है, आई वांट द लास्ट इंडेक्स, ओके। लेट्स से दिस and a simple thing we have to change here is that is last index of, okay, I'm saying a, I'm saying a, ठीक है। सो लास्ट इंडेक्स ऑफ ए, अब यहाँ अगेन अगर आप देखते हो तो लास्ट जो है कंप्लीटली स्मॉल लेटर्स में हमने लिखा है, ठीक है। देन इंडेक्स का आई कैपिटल है, ओ का, ऑफ का आई ओ कैपिटल है, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड अगेन। सो हर वर्ड का पहला लेटर, मतलब फर्स्ट वर्ड छोड़कर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। तो इसको हमने सेव कर लिया, देन अगेन कंपाइलिंग इट, ठीक है। पहले काम करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। सो कंपाइल किया है, ठीक है, एंड इंटरप्रेट करते हैं, सो सी, ठीक है। आई लव जावा, देन कैरेक्टर गिवन इंडेक्स दैट इज एल का जो है वो 2, ठीक है, ए, ठीक है, इंडेक्स ऑफ ए अगर पहला देखते हैं तो इज 8 एंड लास्ट इज 10, लास्ट इज 10, ठीक है। तो बराबर इस तरीके से वो हमें दे रहा है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, ठीक है। सो ध्यान रखना है, ओके। सो दिस इज हाउ वी डील विद द इंडेक्सेस, ठीक है। तो देखिए हमने पहला क्या निकाला था कि कैरेक्टर ऐड, ठीक है। तो कैरेक्टर ऐड मतलब हमने इंडेक्स नंबर पास किया था, तो इंडेक्स नंबर पास करके हम उसका कैरेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। देन वी हैव सीन कैरेक्टर ऐड के बाद हमने क्या किया कि इंडेक्स ऑफ के, अगर हम कैरेक्टर पास करते हैं तो उस कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर क्या है, उसके बाद हमने लास्ट इंडेक्स भी देख लिया उसी कैरेक्टर का। Now let's move ahead with another one. Okay, so let's say clear this and let's move ahead with this as well. Okay, so let's call it 4 and I'll save it. Okay, so let's say 4 and put it all files. Okay,
फाइन। सो अब यहाँ पर कुछ और करते हैं, ठीक है। Now, I just want to check whether the string starts with, okay, starts with, okay, okay, given string starts with given string, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रहा है क्या गिवन स्ट्रिंग के साथ। आई डोंट नीड दिस एंड आई रिमूव दिस एज वेल, ठीक है। तो अब हमको चेक करना है कि जो हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो स्ट्रिंग जो है वो पर्टिकुलरली स्ट्रिंग के साथ स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो हमको चेक करना है। तो अगेन वी विल चेंज द मेथड हियर, ठीक है। अगेन वी विल चेंज द मेथड हियर, ओके। सो अब अगर हमको जो फंक्शन यूज करना है, नाउ व्हाट वी विल बी यूजिंग स्टार्ट्स विथ, ओके। सो फंक्शन इज स्टार्ट्स विथ, ठीक है। अब हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, स्टार्ट्स विथ। अब इसको हमको एक पास करना है स्ट्रिंग, इसको हमको पास क्या करना है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमको इसको पास क्या करना है, स्ट्रिंग। अब ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, तो ये चेक करेगा कि ये जो हमारा गिवन स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ स्टार्ट हो रहा है क्या। तो हम जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देंगे, अगर मैंने सिंपली वन भी दिया तभी वो चेक करेगा वन है क्या, ठीक है। एंड इफ आई से लाइक दिस, ठीक है, तो जो भी हमने जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पास किए उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमें वो बताएगा। नाउ दिस फंक्शन इज, और इसका टाइप जो है रिटर्न टाइप अगर हम देखते हैं फंक्शन का, तो इसका फंक्शन, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है बुलियन, ठीक है। तो ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये बुलियन हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। जैसे हमने इसमें आई स्पेस एल दिया है, इसमें आई स्पेस एल ओ दिया है, ठीक है। बट देर इज अ डिफरेंस, यहाँ देखिए ये कैपिटल है आई स्पेस एल, ठीक है। एल इज ऑल्सो कैपिटल, आई इज ऑल्सो कैपिटल, यहाँ पर हमने कैपिटल नहीं दिया है। so okay, so keep again we have to keep one thing in mind कि ये जो फंक्शन है ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो हमको एक ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो ये फंक्शन केस सेंसिटिव है मतलब क्या होगा, ओके। अब वो चेक करेगा पर्टिकुलरली उसी केस में ये है या नहीं है, ठीक है। अगर ये उसी केस में है तो वो बराबर मतलब ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सो लेट्स चेक फर्स्ट, ओके। सो कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल हो गया, कोई उसमें एरर अभी है नहीं। एंड नाउ वी विल इंटरप्रेट, सॉरी, सिग्नलिंग 4 ही है, ओके। शायद प्रोग्राम सेव ही नहीं हुआ है, ओके। ओके, नाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट, अब सेव हो गया, ठीक है। सो सी फर्स्ट इसमें हमको दिखा रहा है आई स्पेस एल, ठीक है। तो आई स्पेस एल जो है एग्जैक्टली यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर मैच कर रहा है कि स्पेस केस सेंसिटिव जो हमने बोला था कि केसेस भी मैच कर रही है, ठीक है। वही हमने यहाँ पर दिया आई स्मॉल में दिया, तो ये हमने इसने हमको रिटर्न किया फॉल्स, ओके। सो इसने हमको रिटर्न किया फॉल्स, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ध्यान रखना है हमको, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स के ट्रू एंड फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा लिखा है तो ये बराबर हमको क्या करेगा, केस यही करेगा। अगर ऐसा भी लिखता हूँ तो क्या होगा, अगर हमने ऐसा लिखा है स्मॉल आई स्पेस कैपिटल एल ओ, व्हाट विल बी द आउटपुट, अगेन फॉल्स, यस करेक्ट, ठीक है।
So again we will get false. Okay, so false ही मिलेगा. Yep, we will get the false. Okay. So ध्यान रखना है. ठीक है, so it is case sensitive one. Similarly, we can check a function. Okay, we have another function check करने के लिए. ठीक है, एक और function हमारे पास है जो होता है ends with. ठीक है, so if I say ends with, ठीक है, so we can use ends with. ठीक है, अगेन ये भी क्या होगा, केस सेंसिटिव होगा. अब हमने लिखा है जावा. ठीक है, या सिंपली वीए पास करो, व्हाटएवर यू वांट टू पास. ओके, वीए देन चलो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, या व्हाटएवर एनीथिंग यू वांट टू पास, कुछ भी आप पास कर सकते हैं. ठीक है, सो वी जस्ट वांट टू चेक. ठीक है, तो इसको हमने सेव कर लिया. अगेन हमने इसको कंपाइल किया है. नाउ फिर से रन कर रहे हैं. तो सी ट्रू फॉल्स पहले तो आ ही रहा था, देन एंड्स विथ में भी ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, तो वी ए बराबर एंड ऑफ द स्ट्रिंग है. एंड ऑफ द स्ट्रिंग वी ए इज प्रेजेंट. ठीक है, वही आई एल ओ उसमें है क्या, है नहीं, है ना. एंड में है क्या, नहीं. तो वी विल गेट फॉल्स. वी विल गेट फॉल्स. सो दो अलग अलग फंक्शंस हमारे पास है, ध्यान रखना है. ठीक है, सो फर्स्ट इज starts with. first is starts with. Okay, so वो चेक करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर पास कर रहे हो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में. ठीक है, अगर आपने सिंपली आई भी पास किया तो आई बताएगा. ठीक है, बट इट इज केस सेंसिटिव. ध्यान रखना है कि इस स्ट्रिंग के स्टार्ट में है या नहीं है. बहुत बार हमको जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं चेक करने की कि ओके वहां पर है या नहीं है. ठीक है, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग है या नहीं है. ठीक है, चेक करने की जरूरत पड़ती है कि ये इससे स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो वो चेक करके हम कर सकते हैं. एंड में अगर हमको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है या नहीं, सो वी कैन चेक दैट एज वेल. और इफ यू वांट यू कैन पास द होल स्ट्रिंग टू चेक दैट. ठीक है, और ऐसा भी आप कर सकते हो. ठीक है, बट देयर इज नो मीनिंग इन पासिंग द होल स्ट्रिंग. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड विद द अनदर मेथड. ठीक है, तो अभी तक अगर आपको याद है, जस्ट टू रिवाइज, हमने क्या क्या कवर किया. लेंथ कवर किया, देन कैरेक्टर एट, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, starts with and ends with. Okay, starts with and ends with. Okay, let's move to the example 5. I'll just go and save that first as an example 5 and then I'll change it. Okay, example 5. Okay, fine. So compare. I just want to compare two strings now. Okay, what I'm going to do is I'm just going to compare two strings. Okay, so I am going to compare two strings. Here again I am going to compare two strings. Okay, so I just want to show you the things. Okay, तो अब यहाँ पर उसके लिए हम एक और स्ट्रिंग बना रहे हैं. ठीक है, we will be creating or adding one more string. Let's say string s2 I am saying. Okay, equals to, let's say, I love Java. Okay, so दो हमने स्ट्रिंग क्रिएट की है. अब अगर ये स्ट्रिंग हमको कंपेयर करना है तो वी हैव अ मेथड इक्वल्स. वी हैव अ मेथड इक्वल्स. अब s2 डायरेक्टली आप यहाँ पर पास कर सकते हो इस तरीके से. ठीक है, और यू कैन डू वन मोर थिंग. ठीक है, यू कैन इवन डू इट लाइक दिस, इक्वल्स. ठीक है, यहाँ पर आप जो भी लिखना है इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, जो भी लिखना है इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, इसको फिलहाल मैं यहाँ से कट कर देता हूँ. वी डोंट वांट दिस. ओके, तो यहाँ पर हमने दो तरीके लिए हैं. ठीक है, स्ट्रिंग कंपेयर अगर मुझे करना है तो. ठीक है, तो अब हमने क्या किया, किसके साथ कंपेयर करना है, एस के साथ. किसके साथ कंपेयर करना है, एस के साथ. तो एस में ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है आई लव जावा, जिसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है. ठीक है, देन वी हैव s2. ओके, जिसमें आई कैपिटल है, लव जावा जो है वो स्मॉल लेटर्स में है. ठीक है, सो दैट इज वन.
देन हम दूसरा एक स्ट्रिंग यहाँ पर हमने क्रिएट की है, ठीक है। सो इफ यू वांट, चलो हम इसको एक और ये कर लेते हैं, ओके, एंड आई विल से राइट इट लाइक दिस, ओके। हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया है, ओके। सो तीन स्ट्रिंग्स हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक डायरेक्टली स्ट्रिंग पास किया, यहाँ पर भी हमने डायरेक्टली स्ट्रिंग पास किया, ओके। एंड लेट्स चेक हाउ दिस बिहेव्स, ओके। सो हम इसको कंपाइल कर लेंगे, कोई एरर नहीं है, ठीक है। देन अब इसको हमको एग्जीक्यूट करना है। सो सी s1 सॉरी s डॉट इक्वल्स s2, s डॉट इक्वल्स s2, ओके। तो दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर लव जावा स्मॉल में है, यहाँ पर एल एन जे लव जावा इज कैपिटल, ओके। सो केस सेंसिटिव है, मतलब ये फंक्शन भी क्या है, केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर भी केसेस का ध्यान रखेगा। वही हमने तीसरे में जो पास किया था, आई लव जावा विच इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ एस, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमको क्या मिला है, ट्रू। लास्ट में हमको क्या मिला है, ट्रू, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज बेसिकली केस सेंसिटिव, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है, इक्वल्स इज केस सेंसिटिव, इक्वल्स क्या है, केस सेंसिटिव है। अगर आपको केस बॉदर नहीं कर रहा है, इफ यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द केस, ओके, इफ यू डोंट मैटर अबाउट द केस, इफ यू डोंट बॉदर अबाउट द केस, ठीक है, अगर केस का ध्यान नहीं रखना है, तो एक और काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज अनदर फंक्शन दैट इज इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। अब अगर मैं इसको पास कर रहा हूँ, या फिर दूसरा तरीका ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर, ठीक है, इन एनी वे यू कैन यूज दिस, फाइन। सो अब देखो, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर आई स्मॉल किया, एल एन जे इज कैपिटल, ओके। देन यहाँ पर एस टू पास किया, तो दोनों में ये एग्जैक्टली सेम है क्या, नहीं है। बट नाउ व्हाट फंक्शन वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग इक्वल्स इग्नोर केस, वी आर यूजिंग इक्वल्स इग्नोर केस। तो अब केस मैटर नहीं करेगा, अब दोनों जगह हमको बेसिकली क्या मिलेगा, ट्रू। दोनों जगह हमको बेसिकली मिलना चाहिए ट्रू, ठीक है। सो सी हियर, ठीक है। सो अगेन लास्ट हमको दोनों जगह क्या मिल रहा है, टू, ठीक है। तो अब इसमें इक्वल्स इग्नोर केस में केस सेंसिटिव होगा क्या, नहीं। बट व्हेन यू यूज इक्वल्स, दिस इज अगेन अ केस सेंसिटिव मेथड, केस सेंसिटिव फंक्शन। तो ये क्या होगा, केस सेंसिटिव होगा, इट विल चेक द केसेस एज एग्जैक्टली, ठीक है। तो पूरा स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम है क्या, वो चेक करेगा। विद इक्वल्स इग्नोर केस में कैरेक्टर्स वही है क्या चेक करेगा, बट केस डज नॉट मैटर। केस मैटर करता है क्या, नहीं। ओके, तो केस मैटर नहीं करेगा। होप यू अंडरस्टूड दिस एज वेल, ठीक है। तो ये भी दोनों फंक्शंस आपको समझ गए, कंपैरिजन में मैंने इसीलिए बताया था आपको, ठीक है। सो इक्वल्स इज केस सेंसिटिव, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन फॉर द लास्ट टाइम, इक्वल्स इज केस सेंसिटिव, these methods are used to compare the two strings, okay, two strings we are comparing basically, okay। तो दोनों मेथड्स को हम यूज करते हैं स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए, okay, and we can use them for the things, okay। So hope you understood this as well। तो इसको हम नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। Sorry, okay, and we will move ahead with another function or another method, okay। So let's call it 6 now. First let me change and save it with the name of 6, let's say, okay, and let me clear this, fine। So we have that. Now we will see the another method. I don't want this, I'll remove that as well. Or let's write it like this. Yeah, internally ASCII code से हो रहा है, and it is using both the codes actually, ASCII code and the
Unicode. Okay, so I got a question कि ये internally ASCII code करके ही हो रहा है? Yeah, तो yes. Okay. To capital, or let's write it like this. Capital, and here I'll say change the small. Go on this. Okay, so here we will be using another method now to uppercase. Okay, and to lower case. Okay, simple methods to uppercase and to lowercase. Okay, so let's give it a try with this. Okay, yeah. I just wanted to show you this. ठीक है, तो जैसे मैंने, अगर आपको याद है, मैंने बताया था हर वर्ड का पहला लेटर, फर्स्ट वर्ड छोड़ के हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए, हर वर्ड का पहला लेटर बाद में कैपिटल चाहिए. देखिए, टू हमने स्मॉल में लिखा है, अपर हमने कैपिटल में लिखा है, लेकिन केस इज अनदर वर्ड विच इज हमने क्या लिखा है, स्मॉल में लिखा है. ठीक है, तो जस्ट वी नीड टू चेंज दैट. ठीक है, तो अब अगर हम इसको फिर से कंपाइल करते हैं, सी नाउ देयर इज नो एरर. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट. ठीक है, तो इसलिए मैं जस्ट आपको इसमें दिखा रहा चाहता था. ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू कंपाइल दिस, सॉरी, एग्जीक्यूट दिस, सी ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारा क्या था, आई लव जावा, जिसमें आई लव एंड जे, आई एल एंड जे इज कैपिटल. some when we say to uppercase, when we use to uppercase, okay, it is completely capital letters, and when we use to lowercase, it is completely small letters. Okay, so you can change that. अब अगर आप बोलोगे कि ये कहाँ यूज होता है, कि सच में यूज होता भी है या नहीं होता है, ठीक है, बट ये हर जगह यूज होता है, हर बार यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है. ठीक है, कभी भी अगर आप देखते हो, एक सिंपल सा एग्जांपल चलो आपको डेली लाइफ का बताता हूँ. Yeah. Have you ever seen email IDs in capital letters? No. Email IDs हमेशा हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल लेटर्स में यूज करते हैं. ठीक है, तो अगर हम टाइप किसी भी तरीके से करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, वो स्मॉल लेटर्स में ही उसको ले लेता है. कैसे लेता है, तो इट ऑलवेज कन्वर्ट्स इट टू लोअर केस. हमेशा क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट करेगा टू लोअर केस में. ठीक है, और उसी वे से वो यूज करेगा. ठीक है, सो हर जगह यूज हो रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं हो रहा है ना, हर जगह यूज हो रहा है. Okay, so hope you understand that now. So it's getting used everywhere. People are using it everywhere. Okay, और हर रोज यूज हो रहा है ना. हर जगह हम कहीं, हर बार, हर रोज कहीं ना कहीं लॉग इन करते हैं, कुछ ना कुछ चेक करते हैं. ठीक है, तो यूज हो रहा है. इवन अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, आपका फोन, अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो, तो उसमें भी अगर आप देखते हो, तो उसमें आपके कीबोर्ड पर एक फंक्शन दिया हुआ है, जिसका इंटरनली वो वही यूज कर रहा है. ठीक है, अगर आप कुछ टाइप करते हो, उसको सिलेक्ट करते हो, कुछ टाइप करते हो, उसको सिलेक्ट करते हो, और अब एरो जो दिखाता है उसको अगर आप प्रेस करते हो, तो पहले वो कैपिटल हो जाता है, फिर से प्रेस करते हो तो कंप्लीटली स्मॉल लेटर हो जाता है. तो ये बिहेवियर कैसे डेवलप किया उन्होंने, है ना. फिर से प्रेस किया तो फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है. तो ये बिहेवियर अगेन कैसे उन्होंने डेवलप किया, तो यूजिंग दीज मेथड्स ओनली. Okay, using this methods only. ठीक है, so all those things are there. तो whenever आप जब भी कुछ, कोई भी चीज यूज कर रहे हो, तो think of it as a programmer. अपना प्रोग्रामर अप्रोच आपका होना चाहिए कि ओके, इसको कैसे बनाया होगा या क्या यूज किया होगा पीछे ना. तो कोड आपको समझना चाहिए, आपको चीजें समझनी चाहिए, है ना. उस तरीके से आपने उसको एनालाइज करना चाहिए, सो दैट आप सारी चीजें समझो और उसको बाद में भी डेवलप कर पाओ. तो आपका जितना एनालिसिस स्ट्रांग होगा, जितना ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगा, आप उतना इजीली उस चीज़ों को एनालिसिस कर पाओगे और डेवलप कर पाओगे, है ना. So you need to have that in mind. Okay, so fine. So let's move to the another method. Let me change it to the program 7 first, and इसको clean कर लेते हैं पहले. Yeah, and let me save it. Oh, sorry. What I'm doing. Yeah, sorry. So let's call it 7.
and I have saved it. Fine. So I don't need this now. And there's a character. Okay. Or what basically we are doing here is replace old character with new character. ओके, रिप्लेस द ओल्ड कैरेक्टर विथ न्यू कैरेक्टर. तो हमको ध्यान रखना है अब यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, बट इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है. सो बेसिकली द मेथड इज रिप्लेस, ठीक है. अब रिप्लेस में हमको दो कैरेक्टर्स पास करने हैं, रिप्लेस में हमको दो कैरेक्टर्स पास करने हैं, ठीक है. This is the old character and this will be the new character. Okay, here we have to pass the new and old. Okay, so old and new two characters we have to pass. I am just writing it, but I want to show you. Okay, तो अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा कैरेक्टर आप पास कर रहे हो. जैसे अगर हमने पास किया A और पास किया U, ठीक है, A की जगह हमने पास क्या कर दिया U, ठीक है. तो वो क्या करेगा, ये सारे कैरेक्टर्स, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इट विल रिप्लेस द ए विथ यू, बट द प्रॉब्लम इज इट विल रिप्लेस ऑल द ए इन द स्ट्रिंग, इट विल रिप्लेस द एवरी ऑकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर, इट विल रिप्लेस एवरी ऑकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर, ठीक है. तो हमको ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम इसको यूज करते हैं इट विल रिप्लेस द एवरी ऑकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर. ओके, चलो इसको देखते हैं. तो लेट्स कंपाइल इट फर्स्ट. सो 7, yes, now there is no error. And if we interpret that, see, ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारा क्या था, आई लव जावा. ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारा क्या था, आई लव जावा, ठीक है. जब हमने रिप्लेस किया ए विथ यू, तो रिप्लेस स्ट्रिंग क्या है हमारा, नया स्ट्रिंग क्या है, ठीक है, आई लव जुवू, ठीक है. सो इट्स लाइक दैट. सो इट डिपेंड्स, ठीक है. तो इस तरीके से वो उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है. अब हर चीज में वो चेंज कर देगा, मतलब इट विल रिप्लेस द एवरी ऑकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर. सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, वेरी मतलब कॉशियस, और आपको ध्यान रखना है, ठीक है. whenever you are using this method, replace, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसको प्रॉपरली यूज करो, अदरवाइज क्या होगा कि हर जगह वो उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है. तो अगर आपको सिंपली एक ही कैरेक्टर रिप्लेस करना है तब क्या करोगे. अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ लास्ट वाला रिप्लेस करना है, बाकी रिप्लेस नहीं करना है, व्हाट यू विल डू, कैन यू हैव इट एज एन असाइनमेंट. लेट्स हैव इट एज एन असाइनमेंट, ठीक है. गिव इट अ ट्राई. कैन जस्ट रिप्लेस द लास्ट वन, ठीक है, and see how see who can do it. We'll see who can do it. Okay, last index of कैसे करेंगे. लास्ट इंडेक्स ऑफ से हमें लास्ट मिल जाएगा, डेफिनेटली इंडेक्स मिल गया इसका, बट उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, क्योंकि रिप्लेस तो हमको कैरेक्टर पास करना है, और जो भी कैरेक्टर हम पास करेंगे वो पूरी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा. उस स्ट्रिंग में जितनी भी बार वो कैरेक्टर है उसको रिप्लेस कर देगा. Okay, so how will you do it? Last index of character at optimization करके give it a try and share it with me. Okay, so give it a try कीजिए and share कीजिए प्रोग्राम. Okay, so we'll see किसका करेक्ट है ना. I'll guide you then on that as well. रिप्लेस वर्ड नाम से कोई फंक्शन हमारे पास नहीं है. ओके, गुड. Okay, fine. So let's move to the another one. Let's go to program 8. Okay, we will go to 8.
then index of given character. Fine, you guys can give it a try. Yeah, तो आप try कीजिए, ठीक है? I'm getting a lot of responses in chat. Okay. Give it a try. Try कीजिए इसको as a homework or assignment. Okay, and we'll see who can do it, who comes with the solution. Okay, so we'll try another one. Fine. This is the string. I'm writing or adding another string here. Or let's use this only. What I'm doing here with this string is, अब मैं starting में या end में भी हमने क्या किया है, एक string space add किया है, ठीक है? So doing anything, before doing anything, I just want to print it as it is. Okay, so इसको as it is हम पहले print करके देखते हैं, ठीक है? So I'm printing it here. Okay, see, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत बार अगर जैसे स्ट्रिंग में स्पेस आ जाती है, स्ट्रिंग में अगर स्पेस आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो स्पेस दिख रही है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो स्पेस दिखता है, बट लास्ट में स्पेस हमको दिखता है क्या? नहीं, वी कैन नॉट सी द स्पेस. ओके, वी कैन नॉट सी दैट ट्रेलिंग स्पेस. ठीक है, स्टार्टिंग में अगर स्पेस है तो दिखता है, प्रीफिक्स में दिखता है, पोस्टफिक्स स्पेस दिखता है क्या? नहीं. ठीक है, तो अब इस वजह से क्या होता है, बहुत बार जब भी अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं, जब भी कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो रॉन्ग इनपुट जा सकता है, और ये अगर यूजर आईडी पासवर्ड्स में हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है. ठीक है, बहुत बड़ा इशू हो सकता है, और डेटाबेस में भी एक्स्ट्रा स्पेसेस जाकर एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है. सो we should have an option to remove that. We should have an option to remove those unwanted spaces. Okay, तो उस unwanted spaces को remove करने के लिए हमारे पास option होना चाहिए. ठीक है, so we just you can use that, remove the unwanted spaces. ठीक है, अब उसको remove करने के लिए क्या हम लिख सकते हैं? Any guess? क्या function हो सकता है? Okay, Ankit is correct. Fatima is correct. Anyone else? Vishesh is correct. Okay, so yeah, the function is trim. The function is trim. ठीक है, या फिर अगर आपको याद है तो आप मोस्टली व्हाट यू से, यू गाइस जब भी आप सैलून में या पार्लर्स में जाते हो तो यू से रिमूव, फॉर रिमूविंग द अनवांटेड हेयर्स वी से ट्रिम कर दो, है ना? सो इट्स सिंपल. Okay, so वहीं से word लिया गया, so we use the trim. Okay, we use the trim. Okay, the function is trim. Okay, so when we use trim, and let's compile it again and run it again. See, so now बस यहाँ पे भी अगर देखो एक्स्ट्रा स्पेस जो यहाँ दिख रहा था वो अब यहाँ पर नहीं है, लास्ट का स्पेस तो वैसे भी दिखेगा नहीं. ठीक है, so there's no space, एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ से वो जो था वो रिमूव हो गया. ठीक है, we can see the difference. Okay, we can see the difference. So we use trim. Okay, and let's move to the another one. इसका थोड़ा अभी फिर से spaces को ठीक कर लेते हैं. Let me save it first as 9. Okay, fine. So now what I want to do is I want part of string. I don't want the whole string, I want a part of string. Okay, ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ सो दैट आपको और दिखे. ठीक है, एंड बेसिकली ये जो फंक्शन हम यूज करने वाले हैं अभी, इसके दो सिंटैक्सेस है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट लाइक दिस. ओके, सो
There are two syntaxes. So from given index to given index, and let's say to given index, or we can call it in another way, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, from let's say start index to end index and to end index. तो इसमें there is a difference. Hope you understand what I am writing. Okay, जो मैंने लिखा है, तो from start index to end index, मतलब हमें को इसमें start index बताना है और end index भी बताना है. So this function is basically an overloaded function. Okay, तो जिसके दो syntaxes है. ठीक है, तो start index बताना है, end index भी बताना है. Second वाले में हमको सिर्फ end index बताना है, start index नहीं बताना है. सेकेंड वाले में हमको सिर्फ end index बताना है, start index नहीं बताना है. ऐसा लग रहा है? नहीं, बेसिकली इसमें स्टार्ट इंडेक्स बताना है, ठीक है, एंड इंडेक्स नहीं बताना है. ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस. यहाँ पर यही चीज लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले इसलिए एंड इंडेक्स लिखा था. ठीक है, सो व्हाट इज दैट, आपको ध्यान रखना है. तो बेसिकली सेकंड वाले में हमको सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स बताना है, एंड इंडेक्स नहीं बताना है. ठीक है, बट पहले वाले में हमको स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स दोनों बताना है. ठीक है, तो चलो पहले तो हम देखते हैं कि फंक्शन कौन सा है. तो फंक्शन इज substring. Function is substring. Okay, तो substring is the function. ठीक है, अब कैसे लिखते हैं उसको हम देख लेते हैं. substring. ठीक है, अब चलो सेकंड से स्टार्ट करते हैं कि सेकंड में हमने क्या लिखा है, सिंपली स्टार्ट इंडेक्स बताना है. ठीक है, अगेन इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद 0, तो I is 0, then space is 1 and L is 2. So I am using the index of 2, index 2, that is of L. ठीक है, तो मुझे अब एक स्ट्रिंग चाहिए पूरा L से लेकर जावा तक, लव जावा. ठीक है, तो अब हमने इसमें बताया स्टार्ट इंडेक्स, हमने इसमें क्या बताया, स्टार्ट इंडेक्स, एंड आई हैव गिवन द इंडेक्स ऑफ L, दैट इज L. ओके, तो यहाँ से लेकर वो एंड तक प्रिंट कर देगा. अब सेकंड इसमें हम देखते हैं कि स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स हमको देना है. तो L का क्या है, 2, देन दिस इज 3, ओके, V is 4, this is 5 and space is 6. ठीक है, चलो लेट्स से 2 to 5 हम बताते हैं. ठीक है, सो सी केयरफुली यहाँ पर ध्यान रखना. ठीक है, कि क्या आउटपुट आ रहा है. 2 to 5 आई एम सेइंग व्हाट वी वांट इज 2 to 5. ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले इसको कंपाइल करते हैं. सो 9, ओके, एंड लेट्स एग्जीक्यूट द 9. ठीक है, सो सी क्या आ रहा है. ठीक है, जब हमने दिया 2 to 5, ठीक है, 5 किसका इंडेक्स है, ई का. 5 किसका इंडेक्स है, ई का. तो ई आ रहा है कि यहाँ पर नहीं. जो भी हम एंड इंडेक्स दे रहे हैं, ध्यान रखना है एंड इंडेक्स -1 तक हो जाता है. ठीक है, सो 2 to 5. ठीक है, तो अगर मैंने दिया होता 6 तो वी ई भी आता, मतलब ई भी आता, 6 - 1 5, इंडेक्स 5 तक हो जाता. ठीक है, बट अगर हम स्टार्ट इंडेक्स दे रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर दिया था 2, तो लव जावा इसने पूरा प्रिंट किया है, लव जावा इसने पूरा प्रिंट किया है. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस. लव जावा पूरा प्रिंट हो रहा है. ठीक है, तो जब भी हम स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स दे रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, 2 to 5 जा रहा है, बट 5 - 1 मतलब 2 3 4 ही प्रिंट होगा. क्या प्रिंट होगा, इंडेक्स 2 3 4, कैरेक्टर्स ऑफ इंडेक्स 2 3 and 4. ठीक है, 5 वाला कैरेक्टर प्रिंट होगा क्या, नहीं, 5 वाला कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा, ध्यान रखना है. ठीक है, 5 वाला कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा. ठीक है, बट इंडेक्स नंबर 2 to 4 प्रिंट होगा, 2 3 and 4. ठीक है, वही अगर हम इंडेक्स सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स दिया है, वही अगर हमने सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स दिया है, तो वहां से स्टार्ट करेगा और एंड तक जितने भी कैरेक्टर है वो सभी प्रिंट कर देगा. एंड तक जितने भी कैरेक्टर्स है वो सभी प्रिंट कर देगा. तो ये ध्यान रखना है. सो देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है, होप आपको क्लियर है सबस्ट्रिंग. ओके, सारे फंक्शंस क्लियर है. These were the functions we have used with string handling. Okay, तो string handling में हमने ये सारे functions use किए. All these functions are basically from string class. String class के ये सारे functions है जिसको हमने use किया है. ठीक है, और सारी चीजें यहाँ पर हैं. ठीक है, तो I hope आपको सारे functions अभी clear है. तो आज string functions पर हम इसको रोकते हैं, and then we will start the another topic tomorrow. ठीक है,
इसमें अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो लेट मी नो, है ना। तो अभी तक अगर हम देखते हैं तो हमने कौन कौन से फंक्शंस देखे। वी स्टार्टेड विद द लेंथ, ओके। तो इफ वी जस्ट वांट टू मेक अ नोट, तो हमने कौन कौन से फंक्शंस देखे। वी स्टार्टेड विद लेंथ, देन वी गो टू char at, ठीक है। फिर हमने देखा इंडेक्स ऑफ, देन हमने देखा लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा स्टार्ट्स विथ, ओके। आफ्टर दैट वी सॉ एंड्स विथ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था आई थिंक इक्वल्स, यस इक्वल्स। देन हमने देखा था इक्वल्स, इग्नोर केस, ओके। देन टू अपर केस, टू lower case, okay. Then we had seen replace, then we had seen trim, and the last was, sorry, substring, okay. So if you want to number it, let's say 1, sorry, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 and 14. I am writing 14, ठीक है। क्यों 14 लिखा है? क्योंकि सबस्ट्रिंग के दो सिंटैक्सेस है। सबस्ट्रिंग के कितने सिंटैक्सेस है? दो सिंटैक्सेस है ना। So we should know that. So total, what, how many functions we have seen? 14, okay. So 14 functions we have seen टुडे, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है, ठीक है, इन फंक्शंस को याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल से फंक्शंस है, ठीक है। तो आप उसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आई एम राइटिंग 13 and 14 फॉर सबस्ट्रिंग बिकॉज सबस्ट्रिंग के दो सिंटैक्सेस है, ठीक है। एंड वी हैव सीन दैट हियर, बेसिकली वी हैव created 9 programs, but कुछ, क्योंकि हमारे पास कुछ फंक्शंस कंपैरिजन में हमने देखे, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, इक्वल्स एंड इक्वल्स, इग्नोर केस, टू अपर केस एंड लोअर केस, तो ये हमने कंपैरिजन में देखे ताकि हमको समझ में आ जाए। लेंथ के साथ हमने लेंथ फंक्शन एंड लेंथ वेरिएबल भी हमने देखा था, ओके। सो होप यू रिमेम्बर दैट, okay. So length function and length variable both we have seen here, okay. So hope you remember that, और कोई confusion इसमें नहीं है ना। कोई confusion अगर है तो let me know. Do you have any confusion in these methods, string methods? length variable हम कब यूज करते हैं? array में।